सर गुड टू सी यू। मैं ना अगर भारतीय थिंक टैंक के नजरिए से सोचूं कि जी हम्म। आपको एक तो गिने चुने मैचेस मिले हैं खेलने के लिए, हाँ। 5 या 6 जो भी है, मतलब वो बदल सकता है बिकॉज सीरीज आ सकती है, नहीं आ सकती, जो भी है। एक में बारिश जी। हो गई, दूसरे में फिर थोड़ी बारिश आई, वहां पे डीएलएस आया और वहां पे साउथ अफ्रीका ने मुकाबला जीत लिया। सेकंड T20, आई एम रेफरिंग टू इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ऑल आइज नाउ यस। ऑन द थर्ड T20। आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ मैनेजमेंट एंड अ सिलेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आपके पास बथेड़े प्लेयर पड़े हुए हैं पीछे कि जी जी। आप जब तक उनको टेस्ट नहीं करोगे एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आईपीएल फॉर्म would seem a little unfair in that third हम्म। T20. या How trigger happy will you be with regards to making या changes, knowing that you only have Afghanistan after this? ट्रू। और हैविंग सेड दैट आई विल नॉट बी ट्रिगर हैप्पी एट ऑल। अर्जुन, क्योंकि मेरे ख्याल से जो पॉलिसी है, अगेन वी आर लुकिंग नॉट जस्ट द थर्ड T20 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बट वी आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, करेक्ट? Hmm. तो बिगर पिक्चर के हिसाब से मेरे ख्याल से व्हाट दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, ऐसा मुझे लग रहा है दैट टीम मैनेजमेंट की, यार मुझे पता है कि श्रेयस से मुझे क्या मिल सकता है, करेक्ट? Hmm. वी हैव सीन श्रेयस एट दिस फॉर्मेट, इन दिस फॉर्मेट और एट दिस लेवल। तो मेरे ख्याल से जो सोच ये है कि आगे चल के कि जो दूसरे हैं, जो जो जिनके पास उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको आपने देखा नहीं है उतना, तो इसीलिए फॉर एग्जांपल कोई कह रहा था कि यार यार अभी श्रेयस को बाहर बिठा के तिलक वर्मा क्यों खेल रहा है? आइडिया इज Hmm. बाहर बैठ के नहीं, अपने पास लाइक यू सेड गिने चुने कुछ मैचेस हैं, तो उसके पहले आईपीएल विल बी अ बिग क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिग मतलब विल बी ह्यूज But unfair क्राइटेरिया। in certain sense, अनफेयर because इन when सर्टेन। you're talking about a different team, I understand when you're selecting players on individual capacity, in a Yes. sense. So yeah. Absolutely. I won't use the word unfair, but I think the fact that कि यार the scheduling of everything is such कि आपके पास option नहीं है और कोई, right? Anyways, IPL is a very important factor selection के लिए, especially Hmm. T20, but उसके अलावा white ball cricket में भी इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो, but what you rightly said कि यार ideally speaking, before the World Cup, you want the final 11 or 14, 15 to be together as a unit and play a few games. And I hope, 100%. and I honestly hope कि यार बीसीसीआई would organize some matches. देखिए आईसीसी के कुछ वार्म अप मैचेस होंगे, जैसे अभी इस वर्ल्ड कप में भी हुआ था। Hmm. एक दो वार्म अप मैचेस होंगे, so then warm up matches needs to be taken seriously because they're the last few games to come together as a team. और आई होप कि यार बीच में अगर कुछ गैप वगैरह हो, और अभी क्योंकि अभी भी आईपीएल शेड्यूल नहीं हुआ है, मे बी दी आईपीएल कैन बी थोड़ा सा जल्दी खत्म करके, मे बी इवन शुरू जल्दी करके, खत्म थोड़ा सा जल्दी करके, यू हैव अ विंडो ऑफ मे बी एक छोटा सा 3-4 मैच का सीरीज, इफ यू कैन पुट इट विद समवन बिफोर द वर्ल्ड कप, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ टीम्स विल बी मोर देन हैप्पी टू प्ले अ सीरीज लाइक दैट। तो Sure. ऐसी, हाँ, बट Sure. गोइंग So, बैक but, टू, हाँ, गोइंग हाँ, बैक टू थोड़ा द मुश्किल लग रहा है सर। T20। I get the या merit from where you're coming from. या 100%. नहीं, वही जो आपने कहा ना कि यार इट इज, आई वुडंट से अनफेयर, लेकिन यार यही है, द शेड्यूलिंग इज लाइक दैट। एंड एज फार एज लाइक आई सेड कि यार मुझे लगता है कि सेम टीम के साथ जाओ, क्योंकि आपको एक चीज तो पता लग गया कि आपके पास एक बंदा मिल गया है, रिंकू सिंह, जो कि सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी उस नंबर Hmm. पे खेल सकता है। चल रहा है। सिर्फ आईपीएल भी नहीं, अगला जो जो हाईएस्ट लेवल है उस पे भी वैसे ही खेल सकता है जैसे वो आईपीएल में खेल सकता है। टेम्परामेंट वगैरह ब्ला 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 जो भी देखना था, आई थिंक ही इज टिक्ड ऑल द बॉक्सेस, सो इज चेक्ड ऑल द बॉक्सेस, सो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे ही अब आपको अगला देखना है कि फॉर एग्जांपल तिलक, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी भी देयर आर क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस जहाँ पे, स्पेशली इन द टॉप 4 आप कह सकते हैं, जहाँ पे आपको एक्चुअली पता नहीं है कि यार इट्स नॉट, यू पेंसिल्ड इन अ फ्यू नेम्स, Hmm. राइट? तो वो मेरे ख्याल से आई थिंक तिलक को ही खिलाएंगे और उसी को खिलाना चाहिए, बिकॉज लाइक आई सेड कि कि यार श्रेयस क्या कर सकता है, सो वी ऑल नो श्रेयस का क्या है। तो तिलक को देखते हैं थोड़े मैचेस के लिए, और इट इज ऑल्सो अनफेयर कि एक मैच आया, रन नहीं बनाया, तो अगले मैच में नहीं खेला। Yeah, but sir, if you're talking about Tilak, I think after Surya Kumar Yadav मैं कहीं पढ़ रहा था, from that last T20 World Cup till now, अगर कोई सबसे ज्यादा मुकाबला खेला है यहाँ पे भारत के लिए तो वो तिलक वर्मा ही है. So you persisted with him. I think he's 17 T20 international matches old, and राइट। he's played quite a bit for India in this build-up. So in a sense, what you get from him is, you've seen a guy who has potential, and the reason he's continuously playing in the team is because you think he's there in that mix.
So persist with him Exactly. from that point of view. मैं Yeah. आपको IPL का why I was saying unfair, the only reason is because when you will be judging a player on IPL form, you will also have to take into effect that what he's playing for his franchise, who are the people Yeah. around him who are playing that supporting role, and will that role that he's playing for his franchise in which he will exceedingly do well or not do well, and on which Yeah. you will base your call, will True. that fit into your Indian team? That Yes, is my I mean, only absolutely. जो आप कह रहे हो ना, then selection becomes a little tricky because, like you said, कि सबके roles अलग हो सकते हैं. Okay, for example, हमने रिंकू को देखा कि यार 5-6 पे तो ऐसा खेलता है, ठीक है. क्या पता उसको KKR 4 पे खिला दे. You don't know, right? What if he starts playing at 4? So things like that. I think what you're saying is right. So that's where I think the selectors have to be careful in terms of कि यार कि not just go by performance in IPL, बट किस रोल में परफॉर्मेंस था, क्या वो रूल सूट करता है फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन द इंडियन टीम, वो सब चीजें हैं. और गोइंग बैक टू द तिलक, आई थिंक देयर इज अ obviously what the selectors or the team management is also thinking कि यार there is a genuine chance of him being part of that squad. So there is, like I said, वहाँ पे काफी सारे नाम हैं in the top 4 which include Shreyas and Tilak and I mean काफी सारे नाम हैं यार. I mean all. But has he warranted a place ahead of Shreyas? मैं तो आपको ये सीधा on the spot from what you see. Okay, what I've seen is two thoda sa different kind of players. Okay, so when I say two different, in the sense Shreyas is more on the molds of, let's say, what Virat will do. Right? He'll bat at 130, 135. That's what we've seen. ऐसा नहीं कि वो 150-60 नहीं खेल सकता, but that is what that's what I've seen. Okay, his strength is. Tilak is a little different. Tilak can play faster, so he's more suited for that maybe number 5 slot. Agar Hardik is batting at 4, maybe a left-hander there, or maybe Tilak at 4 and Hardik at 5. So what it also gives you is another left-hander. क्योंकि अगर बाकी अगर options आप देखें top 4 में तो left-hander नहीं है. And also we still haven't seen him bowl a lot, but he can give you an over or two. Okay, yes, so let's not also forget that. So मेरे ख्याल से it boils down to, remember we had this discussion कुछ episodes पहले कि it boils down to what the role of that individual is in the Indian playing 11. और किसको वो ज़्यादा suit करता है. Fair to say that right now, at least Tilak Verma, it looks like he's ahead. Not just because he can do a bit of bowling, but also because you've persisted with him, A, and B, he's shown you that if there are times when you need to bat at 125, bat at 125. If you want to go up to 150, 155, he has that in him as well. Case in point, that second T20, जब सूरज कुमार यादव के साथ जो साझेदारी थी. And from ball 1 he can do that. Ideally, yeah. And left-hander, maybe a over here, an over there. So I think as of now you will be inclined, अगर वो 4-5 वाला जो slot है, not ऊपर, but 4-5 की मैं बात कर रहा हूँ. If you're thinking of someone, I think he fits in there. तो फिर सर ऋतुराज गायकवाड़ का क्या फिर? If we are saying IPL is a huge aggregator deciding where you are, this is number one name courtesy of IPL. But if you look at the pecking order now, Yashasvi Jaiswal, we're expecting Rohit to come back. There is an Ishan Kishan who's sitting there. Exactly. So ऋतुराज गायकवाड़ कहाँ गया? यार वो भी is in the mix, but if you're asking me about my preferences, obviously I would prefer a few of those names before him. He's a good batter and everything else, but when it comes to if I have to pick a team now, तो मेरे ख्याल से he won't be my first 2 options or first 3 options of 1-2 team में. So Yashasvi ahead of him as well, you're saying? I would like to believe yes. I would like to believe Yashasvi before him. Again, Ritu, having said that, he's also can be. So how many, for example, how many similar kind of player do you want? So Ritu, Virat, Rohit, the old Rohit, not the new, Shreyas are very similar. They can all play that 150 wala game, 120 wala game. They all these 3 guys, what I would call a sheet anchor in modern day cricket, in T20, right? So how many of those similar kind of players do you want in your top 4 is the question. I would ideally say 1. In your top 3, 1 of them
ट्रू। दैट एबिलिटी टू कि भैया 120-25 हो या 150 हो या 2 विकेट जल्दी गिर गए हो तो एक एंड को थोड़ा सा स्टेबिलिटी देना है इनिंग्स को। तो वो आई बिलीव आई कैन, फॉर मी इन माय टीम टॉप 3 में एक ही बंदा मैं रखूंगा एटलीस्ट। दिस इज अंडर द assumption कि अगर रोहित शर्मा जब भी आएंगे, रोहित शर्मा या 2.0 आपके साथ हो, तो वो एग्जैक्टली। एक सो और शायद श्रेयस हो या विराट हो, जो भी आप डिसीजन लेते हो। Shreyas, Virat, Rutu, they all three are very similar, the way they play in T20 cricket, ऐसा मेरा मानना So it's strange, हाँ, with ईशान किशन. I'm just wondering कि there is one time ईशान किशन जी दोहरा शतक लगाया था. ईशान किशन आईपीएल में one of the highest paid players मुंबई इंडियंस में गए है। हो. Yeah, उसके बाद में सब बात कर रहे हैं ईशान किशन, ईशान किशन. But suddenly now the pecking order, he's not there. hmm, He's even behind. If I would be right in saying, he's behind Rituraj Gaikwad in the pecking order. hmm. Yeah, I mean, kind of. I won't say behind because again, keeping जो slot है. Let's not forget जो keeping slot है. Don't Hmm. just treat him as a batter. So Rishabh, it's very very glad to know that he should be available for the IPL. So you obviously will not count him out. So Rishabh एक option आ जाता है आपके पास and we'll only have to wait and see his comeback. But Rishabh है, ईशान किशन है, संजू सैमसन है. So these are the other options for keeper. आपको keeper भी तो चाहिए होगा यार. KL Rahul, you know. So you still have those options. So Ishan fits into both the categories, as in your top 3 batter and also obviously your keeper. तो जितेश शर्मा का जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है. So the reason I नहीं keep नहीं, saying this, having if you're said seeing that, this in, so sorry, because having हर said पोजीशन that, में अगर आप देखो, हाँ हाँ, you haven't settled on a choice. You have you lots to choose from. yes, because you still don't have your top guys, as in all of them are not available right now. Jitesh again a very good name, but Jitesh again you cannot compare with Ishan because Ishan would be in top 3, Jitesh would be in the middle order. Correct. KL Rahul top 3, right? Rishabh and Jitesh would be kind of same bracket, 4, 5, 6 वहां पे. So I think there are quite a few, जिसे कहते हैं ना, quite a few balls up in the air right now. वो settle नहीं हुए हैं और वो settle नहीं होंगे I think till the last moment, जब तक IPL नहीं हो जाता, सब available नहीं होते, सबका फॉर्म नहीं पता लगता. And that's the reason I hope कि क्योंकि अभी तक आईपीएल शेड्यूलिंग नहीं हुआ है, इफ द आईपीएल शेड्यूलिंग होता है एंड यू मैनेज टू क्रिएट अ विंडो ऑफ एक सीरीज आप डाल सको, 3 मैच मे बी सीरीज हो बैक गया, टू बैक 2 वार्म मैचेस अप्स हो हो गए, जाए 5 मैच मिल या गए. 7 दिन में आप या 8 दिन में आप 5 मैच खेल लो, 4 मैच खेलो, ऑल्टरनेट डेज खेल लो, फॉरगेट द ट्रैवलिंग बिट ऑफ इट, बट मेक श्योर कि आप जो टीम आपने डिसाइड किया वर्ल्ड कप के लिए, दे प्ले टुगेदर बिफोर द वर्ल्ड कप. So I don't know. You're saying it, I understand, because their hands are like kind of cuffed. Exactly, I know that. तो उसके हिसाब से you're saying कि what is best possible scenario. Fair enough. Exactly. But I'm saying what worked for you in the 50 over format is that you had such planning. It was there. वो You तो could see नहीं it होगा happening. यार. Arjun, you It's know not it happening. कि अब it's too late now. It is too late now. अभी भी we've discussed this before. We don't know who's going to lead the side, right? Yeah. We don't know who's going to be the coach. What will be the support staff? Look like that group. तो वो तो that ship has sailed. तो उसके बारे Then में we don't अर्जुन go आप on as बात करते हैं. favorites. Would I be right in saying? We'll always be thereabouts यार, because we if you look, अगर टैलेंट देखोगे आप और जिस तरीके से हम लोग खेलते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि रन अवे फेवरेट्स, विच एनीवेज इस फॉर्मेट में हम काफी सालों से नहीं है, बट या आप फिर भी एक्सपेक्ट करोगे कि टू बी इन द टॉप 4 यार, उसको वो तो एक्सपेक्ट करोगे ही आप कि सेमीफाइनल्स तो होंगे, सो या रन अवे फेवरेट्स नहीं, या आप कहोगे कि अच्छा अगर टॉप 2 टीमें आपके हिसाब से जो जीत सकती हैं, मे बी नॉट, बट अगर आपका टॉप 4 टीमें, मे बी यस.